आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गाना तो आपने ज़रूर सुना होगा। द ब्लॉकबस्टर एंड कल्ट क्लासिक हिंदी फिल्म स्टारिंग देव आनंद एंड वहीदा रहमान गाइड मूवी से। बट डू यू नो दैट दिस मूवी वॉज बेस्ड ऑन आर के नारायण's द बुक द गाइड, जो पब्लिश हुई थी 1958 में, एंड दिस बुक ऑल्सो गॉट साहित्य अकादमी पुरस्कार इन इंग्लिश। तो आज हम इस मूवी एंड इस नॉवल को रिव्यू एंड कंपेयर करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो गेट टू नो अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। So without any further ado, let's get started. It is about a corrupt tourist guide who falls in love with a beautiful dancer, but there is a catch. The dancer is married, so he seduces her away, and her husband is an archaeologist, a lonely writer. So Raju seduces her away and uses her and transforms her into a celebrity, and finds himself in jail. Why he finds himself in jail, I won't spoil it for you. And through the series of hilarious ironic circumstances becomes one of India's great holy men. So book की starting में हम देखते हैं that there is this person called Raju जो 2 साल बाद रिलीज़ हुआ है जेल से, and ये अपनी सिटी जाने की जगह दूसरे सिटी में चला जाता है, दूसरे टाउन में चला जाता है, और वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि एक क्रिमिनल से एक स्पिरिचुअल गाइड, एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है, लोगों का स्वामी बन जाता है, एंड वो इतना ज़्यादा सफोकेट होने लगता है बिकॉज ऑफ दिस क्राउड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिवेसी, बिकॉज वो प्रिवेसी चाहता था क्योंकि वो जिस शहर को छोड़ के आया है कहीं उस टाउन से लोग आना जाएँ, उसे पहचान ना लें. So he becomes suffocated and then he starts narrating his past to one of his disciples ताकि वो इस चीज़ से और इस ब्लंडर से निकल सके. So we see 2 timelines, present and past की. Past timeline में the book is set in a town called Malgudi. जी हाँ, ये वही मालगुडी है, मालगुडी डेज बाय आर के नारायण वाला. आई वॉज इन ऑर टू नो कि मालगुडी इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू मालगुडी डेज, बट इट इज़ द सोल ऑफ आर के नारायण's वर्क्स. Malgudi is a fictional South Indian town that is present in almost all of his notable works, including this one. So Raju Malgudi का है, and Raju is a very meek, obedient yet very sharp-minded child, and his father is a shopkeeper at railway station. Then Raju becomes shopkeeper, then how he becomes a tourist guide, how he becomes a lover, an obsessive lover I must say, and then कैसे वो जेल जाता है. We see his life, which is basically the philosophy of the novel. The second lead is basically Rosie, the lover. So she is married, but उसका पति वो archaeologist है, वो अपने काम में busy रहता है. They are tourists in Malgudi, and he is their guide. In the first encounter himself, he is enchanted by the beauty of this Rosie. So Rosie, she comes from देवदासी फैमिली. So उसका जो सोशल स्टेटस है वो उसके हस्बैंड को मैच नहीं करता, तो वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ डांस करे. एंड राजू अप्रिशिएट्स हर आर्ट सो मच दैट शी स्टार्ट्स स्पेंडिंग हर टाइम विद हिम. एंड रोजीज़ करेक्टर, आई मस्ट से इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स करेक्टर जो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ा है आज तक. शी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट, अ वेल एजुकेटेड विमेन, येट शी एट मैनी पॉइंट्स इज़ सो इनोसेंटली फुलिश कि मुझे उस पर गुस्सा आता है एंड पिटी भी आती है. सो शी इज़ अ करेक्टर दैट इज़ प्रेजेंट इन द नावल एंड एट द सेम टाइम शी इज़ एब्सेंट फ्रॉम द नावल. बट एनी वेज दिस इज़ द प्लॉट ऑफ द नावल. एंड कुछ होता है, बिकम्स अ स्विंडलर एंड देन ही गोज़ टू जेल, फिर वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है and he becomes a spiritual guide. To be very honest, he was still a swindler जब वो spiritual guide बना. Last के 10 or 15 pages, hardly 10 to 15 pages, we see the redemption of Raju, and we see कि हाँ, this was the actual transformation in his life that came. So this is about the novel. Now let's talk about the movie. And मैं ये भी बताऊँगी why R.K. Narayan hated the movie adaptation. Yes, he hated. कुछ पॉइंटर्स मैं दूंगी, बट उससे पहले लेट मी टेल यू दैट देयर वर 2 वर्जन्स ऑफ दिस नॉवल. एक गाइड हिंदी वर्जन फॉर द इंडियन एंड ईस्टर्न ऑडियंस, एंड एक द गाइड फॉर द वेस्टर्न ऑडियंस, स्टारिंग द सेम एक्टर्स इन द कास्ट. बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस था, whole script was changed. The English version is more accurate and close to the novel, whereas Hindi version वो Indian audience के हिसाब से बनाया था. It was so much changed कि R.K. Narayan in his autobiography said कि this is not guide, it is not my guide, it is a misguided guide. Why he hated this movie adaptation, I'll give you pointers very quickly. First was Malgudi was not in existence. This book is set in Malgudi, and Malgudi is just not a name, it's just not a fictional town, and Malgudi is a South Indian town. But the movie is set in Rajasthan, a North Indian town.
सो जब आर के नारायण आस्क्ड द डायरेक्टर और प्रोबेबली देवानंद कि उन्होंने मालगुडी को चेंज क्यों किया, ही सेड कि मालगुडी इज़ अ फिक्शनल टाउन, मालगुडी could be anywhere in India or outside India, and this disappointed R.K. Narayan to the core, because for him he wrote the book keeping in mind the customs and culture of South India, and Malgudi was just not a fictional town for him, it was everything. Second reason, अगर आपने मूवी देखी है, so it's a spoiler. मूवी में मार्को, that is Rosie's husband, he cheats first, and this gives this excuse or justification for her to walk away from her husband and be with Devanand. But in novel, he is not a romantic person at all, but he is faithful to his wife. He is like married to his work. But in the novel, it is she who finds solace with Raju and commits adultery and, be with him because she is lonely and not appreciated by her own husband. If you have seen the movie, Devanand was always a hero. Raju was always a hero, and his journey from a hero to a saint. I don't know why people find philosophy in this thing, but in the novel you can actually see the philosophical formula, philosophical hint, because he was a swindler. So his journey was from a swindler to a mystic saint. He was an anti-hero in the novel at first, but movie में वो हमेशा से hero था. Movie में he loved Rosie and Rosie loved him. In the novel एक दूसरे से कोई प्यार नहीं करता था. He was obsessed and attracted with Rosie. He never loved Rosie. And Rosie, she was with him because she felt underappreciated. She could dance freely with him. So that was the reason she was with him. She was not in love with him. And there are various points and dialogues I could pinpoint which makes it clear that they were not in love with each other. English version was a more accurate version of this, but English version was a flop. एंड अगर इंग्लिश वर्जन इंडिया में रिलीज़ होता या ये नॉवल का एक्यूरेट वर्जन रिलीज़ होता इवन इन 2024, इट वुड हैव बीन अ फ्लॉप मूवी. मैं लिख के दे सकती हूँ, बिकॉज एडल्ट्री इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म. एंड इन द मूवी वहीदा रहमान इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, रोजी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन. Here she is the most complex, most naive character I have seen ever in my life. So in conclusion, the movie and the novel are incomparable. So if you want to enjoy the accuracy of the novel, watch the English version. But if you want to enjoy the songs, the acting, the emotion, you can watch the Hindi versions. So that's it for today's video. Video थोड़ी लंबी खिंच गई because of the comparison. But I hope you will enjoy this video and consider subscribing. Bye bye.